Welcome the KIE electrical vlog. In this video, we demonstrate how to perform AC hole mini core cutting using a hammer machine for installing a 1/5 inch PVC pipe with end caps on both sides. This detailed guide is perfect for anyone looking to achieve professional results in air conditioning, installations, or electrical projects. Whether you're a DIY enthusiast or a professional electrician, this tutorial provides everything you need to know to complete the job efficiently and effectively. What you'll learn in this video: core cutting for AC pipe installation. Discover the best practices for creating precise holes for AC piping. We'll show you how to safely and accurately use a hammer machine to achieve clean cuts without damaging surrounding areas. How to use a hammer machine effectively. Learn the proper handling techniques and safety precautions for operating a hammer machine during core cutting. Installing a 1/5 inch PVC pipe. Step-by-step instructions for fitting a PVC pipe into the core cut hole. We'll also highlight the importance of using the correct pipe size for AC and electrical installations. Securing PVC end caps. See how to install end caps on both sides of the PVC pipe to ensure durability and proper sealing, preventing debris or moisture from entering the pipe. Why? This process is important. Proper core cutting and pipe installation are crucial for AC efficiency and longevity. A well-installed pipe ensures smooth cable management, minimizes damage risk, and enhances the overall safety of the system. Always wear protective gear while working with hammer machines. Use a high-quality core cutter for precise and efficient results. Double-check measurements before cutting to avoid errors. If this tutorial helped you, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more detailed guides on electrical work, AC installations, and DIY projects. Feel free to leave your questions or feedback in the comments section below. Turn on notifications so you never miss an update. इस वीडियो में हम आपको ऐसी होल मिनी कोर कटिंग की प्रक्रिया दिखाएंगे जिसमें हैमर मशीन का उपयोग करते हुए 5वां हिस्सा इंच पीवीसी पाइप के साथ दोनों सिरों पर एंड कैप लगाना शामिल है। ये विस्तृत गाइड उन लोगों के लिए है जो एयर कंडीशनिंग, इंस्टॉलेशन या इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में पेशेवर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे सौगढ़ है का KIE इलेक्ट्रिकल व्लॉग्स में आप एक DIY उत्साही हों या एक पेशेवर इलेक्ट्रिशियन, ये ट्यूटोरियल आपको काम को कुशलता और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करता है। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? ऐसी पाइप इंस्टॉलेशन के लिए कोर कटिंग, जाने कि ऐसी पाइपिंग के लिए सटीक छेद कैसे बनाएं। हम आपको दिखाएंगे कि बिना आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए साफ सुथरे कट के लिए हैमर मशीन का उपयोग कैसे करें। हैमर मशीन का सही उपयोग कैसे करें। कोर कटिंग के दौरान हैमर मशीन को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सही तकनीक और सुरक्षा उपाय सीखें। एक 5वां इंच पीवीसी पाइप इंस्टॉल करना। कोर कट छेद में पीवीसी पाइप फिट करने के लिए चरण दर चरण निर्देश। हम यह भी बताएंगे कि ऐसी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए सही पाइप आकार का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। सही कोर कटिंग और पाइप इंस्टॉलेशन ऐसी की कार्यक्षमता और लंबी उम्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही तरीके से इंस्टॉल किया गया पाइप केबल प्रबंधन को आसान बनाता है, क्षति के जोखिम को कम करता है और पूरे सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाता है। हैमर मशीन के साथ काम करते समय हमेशा सुरक्षा गियर पहने। सटीक और प्रभावी परिणामों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कोर कटर का उपयोग करें। कटिंग से पहले मापों की दोबारा जांच करें ताकि गलतियों से बचा जा सके। यदि यह ट्यूटोरियल आपके लिए सहायक रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर और भी विस्तृत गाइड्स के लिए जुड़े रहें, जैसे ऐसी इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क
और DIY प्रोजेक्ट। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे अपडेट कभी ना चूकें। PVC एंड कैप को सुरक्षित करना। पाइप के दोनों सिरों पर एंड कैप लगाने की प्रक्रिया देखें ताकि पाइप टिकाऊ और पूरी तरह से सील रहे और उसमें मलबा या नमी ना जाए।